everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your cloud computing class, and this lecture is 114. As we had discussed 113 lectures till the last class, and first of all, in today's class, in the class 114, that we're gonna discuss is the cloud technologies and the advancements. This is your fifth unit. We had completed till the last class unit 4, and this unit consists of unit 5, and the name of the unit is cloud technologies and advancement, जिसमें हम Hadoop के बारे में पढ़ेंगे, as well as Hadoop के साथ साथ users of Hadoops, क्या users आपके Hadoops के हैं, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस है Hadoop के, उसके साथ फीचर्स क्या है Hadoops के, वो सारी चीज़ों के साथ साथ हम उसके आर्किटेक्चर जो Hadoop का है उसको भी डिस्कस करेंगे आज ही के क्लास में. So in all total you can say that will complete total Hadoop part of this unit in this lecture only. So the first heading, as I said, you will discuss Hadoop. So Hadoop के हम features, advantages, as well as their users, as well as their architecture, all the things related to the Hadoop we'll discuss in this class, which consists of this unit 5 with cloud technologies and the advancement. So the first topic that we have for this unit is Hadoop. So the Hadoop is an open source software framework. Hadoop जो है वो आपका open source software framework है, used for storing data and running application on clusters of commodity hardware. So basically जो Hadoop है आपका वो एक open source software framework है जो कि आपका store करता है data, storing of data के लिए use करता है, running application on a cluster commodity hardware. That's the reason why Hadoop is used for. Now the second point for the respect of Hadoop that we're gonna discuss here, it provides a massive storage. ये आपको एक massive storage, large amount of storage provide करता है for any kind of data. कोई भी data आपका किसी भी type का हो, आपका massive storage provide करता है. Enormous processing power and ability to handle the virtually limitless concurrent tasks or jobs. So it totally provides a massive storage that is any kind. अगर आपके पास कोई भी kind of data है तो आप massive storage Hadoop के through यूज कर सकते हो. एनॉर्मस आपका प्रोसेसिंग पावर होता है, इवन दो it has the ability to handle the virtually limitless concurrent task or the limitless concurrent jobs that they given by a concurrent task or a concurrent your job also. The Hadoop ecosystem is a framework. Hadoop ecosystem एक framework है of various types of complex and evolving tools, जो कि आपका इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो आपका जो हडूप इकोसिस्टम है वो एक आपका फ्रेमवर्क है जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग टूल्स और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे आपको, and वो different actually होते भी हैं each other in the terms of their architecture. However, what keeps them all together under a single roof is that they are derived their functionalities from the scalability and the power of Hadoop. तो basically तो Hadoop के अंदर जितने elements होते हैं, बहुत सारे ऐसे elements होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा different होते हैं, but फिर भी वो एक roof के अंदर, एक architecture के अंदर इसलिए रहते हैं, उनके एक ecosystem में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी जो functionalities होती है वो उनकी scalability के ऊपर होती है, as well as they are the power of Hadoop. Okay, so the next point with reference to the Hadoop that we have to discuss here, Hadoop ecosystem can be defined as a comprehensive collection of tools. Hadoop ecosystem की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका एक डिफाइंड कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन होता है टूल्स का, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का, दैट कैन बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड. और Hadoop के केस में वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी होता है एंड द डिप्लॉय टू प्रोवाइड डेटा सोल्यूशन इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. और इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उसका सोल्यूशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है उसी डिप्लॉयड जो प्रोवाइड करता है आपका डेटा सोल्यूशन. इस वजह से भी Hadoop यूज होता है. एंड नाउअडेज maximum times we are using a Hadoop for the massive storage as well as for their advantages that they are providing. So in that particular case we are using the Hadoop nowadays very much. Moving on with the next point that we are doing with Hadoop, but before that I was just telling you Hadoop is an important point with reference to the unit that we are discussing in the cloud structure, that is cloud computing, the cloud technologies and advancement, as well as Hadoop is related to important to your future
purpose also, because this is used nowadays too much, so you have to know very well about the features of Hadoop, the uses of Hadoop, as well as your architecture of Hadoop, as well as the advantages of Hadoop, and in the case of the Hadoop ecosystem, and here had about the Hadoop also. So all these respects में भी आपका Hadoop जो है बहुत important है. So please, this is an important class. Do like, share and subscribe our channel. Now moving on with the next point that we have with related to the Hadoop that we have. So with related to Hadoop, MapReduce and Hadoop distributed file system. So MapReduce will discuss now about MapReduce also. So MapReduce and Hadoop distributed file system, जिसे हम Hadoop distributed file system full form है HDFS. So H stands for Hadoop, D stands for distributed, F stands for file, S stands for system. So Hadoop distributed file system are the two core components of the Hadoop ecosystem that is used to manage the big data. However, they are not sufficient to deal with the big डेटा चैलेंजेस. सो मैपरेड्यूस जो है और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये दोनों ही आपके बहुत ही कोर कंपोनेंट है हडूप इकोसिस्टम के. उसके साथ साथ बट ये बिग डेटा को ज़्यादा डील नहीं अच्छे से कर पाता, बिकॉज उसके पास इतना सफिशेंट बिग डेटा जो चैलेंजेस होते हैं, तो उसके पास इतनी सफिशेंट क्वालिटीज़ नहीं है जो कि वो डील कर सके. ओके, अलॉन्ग विद दीज टू द हडूप इकोसिस्टम प्रोवाइड्स अ कलेक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट टू सपोर्ट द complete development and the deployment of the big data solution. But ये कह सकते हैं with reference to MapReduce और Hadoop distributed file system HDFS के बाद अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे collections of various elements हैं Hadoop environment ecosystem के पास, जहाँ पे आपका एक complete development as well as the deployment जो big data solution को provide कर सकता है. Now moving on with this, we had completed the Hadoop. What does Hadoop stands for? What does the Hadoop ecosystem stands for, and what does it mean? That we discussed. But now we are discussing the uses of Hadoop. What are the uses of Hadoop that we have to discuss? So uses of Hadoop discuss करने से पहले that you have to, the first point that you have to know, ability to share and process huge amount of any kind of data quickly. तो उसके पास uses of Hadoop का use यही होता है कि उसके पास एबिलिटी हो स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, चाहे वो डेटा आपका कितना कैसा भी हो और कितना भी हो. ओके, बहुत इजीली उसको एबिलिटी स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके. द सेकेंड पॉइंट इज योर कंप्यूटिंग पावर. कंप्यूटिंग पावर यूजर्स फर्स्ट, द कंप्यूटिंग पावर इज Hadoop distributed computing model process big data fast. तो कंप्यूटिंग पावर क्योंकि Hadoop के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि Hadoop जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल होता है वो आपका बिग डेटा को भी बहुत जल्दी कंप्यूट कर सकता है. थर्ड आपका है फॉल्ट टॉलरेंस. फॉल्ट टॉलरेंस इज द बेसिकली फर्स्ट मोस्ट एडवांटेजेस दैट यू कैन से, बिकॉज फॉल्ट टॉलरेंस, अगर फॉल्ट टॉलरेंस पहले ही हो जा रहा है, फॉल्ट आने से पहले उसको टॉलरेट करने की एक कैपेबिलिटी दिखा रहा है वो, तो ऑफकोर्स आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं है. तो यूजर्स ऑफ Hadoop में पहला थर्ड आपका फॉल्ट टॉलरेंस है. डेटा एंड द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग are protected against the hardware failure. If a node goes down, jobs are automatically redirected to the other node to make sure that distributed computing does not fail, as well as multiple copies of the data are stored automatically. तो फॉल्ट टॉलरेंस के साथ यही होता है कि अगर फॉल्ट टॉलरेंस हो जाता है तो Hadoop के थ्रू ये जो डेटा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होता है उसके वो मल्टीपल कॉपीज उसके ऑटोमेटिकली सेव कर देता है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर फेल नहीं होता तो. Next is your fourth is flexibility. Flexibility is also most important part for any of the services, any of the data that we are storing. So flexibility, unlike the traditional relational database, जैसा कि हम पहले traditional relational database पढ़ते थे बनाते थे, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वी डू नॉट हैव दैट द प्रोसेसर प्री प्रोसेसर डेटा बिफोर स्टोरिंग इट. वी कैन स्टोर एज मच डेटा एज वी वांट एंड वी डिसाइड हाउ टू यूज इट लेटर. दैट इंक्लूड्स अंडरस्टूड अनस्ट्रक्चर्ड unstructured डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो. तो बेसिकली क्या होता था, पहले हमें रिलेशनल डेटा जो हम लोग बनाते थे उसमें क्या होता था, हमें पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता था अपने डेटा को, देन वी विल डू द फर्दर प्रोसेस. तो बट अभी क्या है कि हम जितना ज़्यादा डेटा डालना चाहें वो हम डाल सकते हैं. उसके बाद हम उसको फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हैं हमें किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसको यूज़ करना है. और जैसे कि जो हमारा डेटा होता है दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इवन दो इन द फॉर्म ऑफ इमेज एंड एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो ऑल्सो.
द फिफ्थ पॉइंट इज योर लो कॉस्ट. लो कॉस्ट क्या है? लो कॉस्ट में द ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज फेस यूजेस द कमोडिटी हार्डवेयर टू स्टोर द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा. क्योंकि जो हडूप है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है. उसके लिए फिर ऑफकोर्स जितना ज़्यादा डेटा है उसके हिसाब से उतना कॉस्ट भी होता है. बट हडूप के केस में ऐसा नहीं है, ये लो कॉस्ट में होता है. इस वजह से इसको ज़्यादातर लोग, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क भी है एज वेल एज लो कॉस्ट है, इसलिए भी लोग यूज़ करते हैं. They prefer Hadoop. Scalability is the sixth point of users of Hadoop, where we can easily grow our system to handle more data simply by adding the nodes. तो scalability भी देखी जाती है क्योंकि हम इसमें easily grow कर सकते हैं अपने system को, जिसमें हम बहुत ज़्यादा more data को simply, जैसे जैसे हम nodes उसमें join करते जाएंगे वैसे वैसे हम उसमें अपना more data डालते भी जाएंगे system के अंदर. तो इसकी scalability भी है. नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ हडूप. एडवांटेजेस ऑफ हडूप की बात करते हैं तो पहला एडवांटेजेस है आपका फास्ट. सेकेंड एडवांटेजेस वी हैव स्केलेबल. थर्ड एडवांटेजेस इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड द फोर्थ इज द रेसिलिएंट टू फेलियर. Okay, so the first is your fast and this is the advantages of Hadoop. तो first advantages में fast जो है in HDFS की मैंने आपको बात बताई थी. Okay, HDFS the data distributed over the cluster help in the faster retrievals. HDFS की बात करती हूँ अगर मैं. So in HDFS, the data distributed over the cluster help in the faster retrieval, and the tools are prevent on the same server, reducing the processing time. It is able to process the terabytes of data in minutes and petabytes in hours. So जो terabytes data होते हैं वो minutes में ही आपके इसमें able process हो जाते हैं, और आपके जो petabytes होते हैं वो आपके hours में आपके able to process हो जाते हैं. Okay, this is the processing time, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका fast है क्योंकि terabyte जो आपका डेटा होता है, जो कि इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा है, वो आपका मिनट्स में ही प्रोसेस्ड हो जाता है. और अगर आप पेटाबाइट्स की बात करते हैं तो पेटाबाइट्स जो डेटा है वो आवर्स में भी आपका हो जाता है. तो दिस इज द वेरी फास्ट एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर यूजिंग द हडूप सिस्टम. ओके, the second is your scalable की बात करते हैं. the Hadoop cluster can be extended by just adding nodes in the cluster. As I said you, when we have to add some of the data, then we can add the nodes in between and we can use that, we can extend that data, the cluster, the Hadoop cluster, we can extend by just adding the nodes in the cluster. The third one is the cost effective. That is cost effective. In the case of the cost effective, we've been saying thing, Hadoop is an open source, just like as I said you before also. Hadoop is a cost efficient, and as well as Hadoop is an open source that uses the commodity hardware to store the data, so it is cost effective as compared to the traditional relationship database management system. सो RDBMS जो होता है, जिसे हम रिलेशनल आपका DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं. तो अगर DBMS में मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, तो हडूप जो है एक ओपन सोर्स है जिसकी जो हार्डवेयर के लिए यूज़ होता है, स्टोर करने के लिए डेटा को यूज़ होता है, और ये क्योंकि ज़्यादा डेटा को करता है इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव रेसिलिएंट टू फेलियर. So resilient to failure, where you can see that HDFS. Okay, so this is your Hadoop distributed file system has the property with which it can replicate data over the network. So if one node is down, or the same for the other network. बेसिकली क्या होता है कि रेसिलिएंट टू द फेलियर का मतलब है दैट इट हैज़ अ प्रॉपर्टी विद इट्स दैट इट कैन रेप्लिकेट, इट कैन डुप्लीकेट द डेटा ओवर द नेटवर्क. आपका डुप्लीकेट कर सकता है ओवर द नेटवर्क एज वेल एज इफ वन नोड इज डाउन, जैसे ही एक नोड अगर डाउन होता है तो आप दूसरे अनदर नेटवर्क पे इसको एप्लीकेबल कर सकते हो. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव इज तो failure that happens that the Hadoop takes the other copy of the data and use it. Normally data is replicated thrice, but the replication factor is configurable. तो बेसिकली जैसे ही आपका अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका एक नेटवर्क पे एक नोड जो है वो डाउन हो गया है, तो आपका जो कुछ अगर अदर नेटवर्क फेलियर नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो अपना कॉपी डेटा कर देगा. और जो नॉर्मली रेप्लिकेट करता है डेटा को थ्राइस करता है, 3 टाइम्स करता है, एंड द रेप्लिकेशन फैक्टर इज अ configurable. Now coming to the next that we have your features of Hadoop. तो features of Hadoop के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो पहला फीचर आपका है suitable for the big data analysis. The first feature we have is big data analysis. फीचर ऑफ Hadoop की बात करते हैं तो पहला है suitable for the big data analysis as
big data tenders to be distributed and understood in nature, Hadoop clusters are best suited for the analysis of the big data. Big data को analysis करने के लिए वो Hadoop cluster जो है वो आपका nature wise use करा जाता है, जो कि बहुत understood होता है, unstructured form में भी होता है. Since it is a processing logic that is not the actual data that flows the computing nodes, less networking bandwidth is consumed. Where it is suitable or for the big data analysis, this concept is collected called as data locality concept. इस concept को जो आपका suitable of big data analysis होता है, इस concept को हम आपका data locality concept भी बोलते हैं, which helps to increase the efficiency of Hadoop based application. तो Hadoop based application के through ये आपका efficiency जो है वो increase करता है. Now the second that we have a feature here, you can see the second feature is scalability. Scalability, in the case of the scalability, Hadoop cluster can easily be scaled to an extent by adding an additional cluster nodes and thus allow the growth of the big data. So स्केलेबिलिटी की बात करते हैं अगर, तो हडूप जो क्लस्टर है वो आपका एक इजीली स्केल्ड कर सकता है एक एक्सटेंट तक, जहाँ पे आपके एडिशनल क्लस्टर्स नोड्स होते हैं, ओके, एंड इवन दो दे आर अलाउइंग ग्रोथ ऑफ द बिग डेटा. एंड अबाउट स्केलिंग डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशंस टू एप्लीकेशन लॉजिक. स्केलिंग जो होती है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप मॉडिफाई करें एप्लीकेशन लॉजिक पे भी. नाउ मूविंग ऑन विद योर थर्ड वन दैट वी हैव, थर्ड फीचर फॉर द हडूप दैट वी हैव. The third feature we have is a fault tolerance. So third feature for the Hadoop is fault tolerance. Hadoop ecosystem has a provision to replicate the input data to the other cluster nodes. Cluster nodes को जैसे आप ऐड ऑन करते रहोगे, आपका input data जो आपका होगा वो replicate भी करता रहेगा. In the case of the cluster node failure, अगर मान लो कोई cluster node जो कि आप ऐड ऑन कर रहे हो, जो कि data store करने के लिए यूज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर मान लो कोई node failure हो गया, तो data processing can still be processed by the using the data stored to the another cluster node. बेसिकली क्या होता है, अगर आपका नोड फेलियर हो जाता है तो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो फिर भी प्रोसेस करेगा आपका डेटा स्टोर्ड जो दूसरे क्लस्टर नोड पे होगा. Now the third, the next heading we have is your modules of Hadoop. क्या क्या modules हैं Hadoop के, that we have to discuss. And here you can see that the modules of Hadoop. First module is HDFS, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, Hadoop Distributed File System. So HDFS. I think आपको अब पता चल गया होगा HDFS का क्या यूज़ है और क्या मॉड्यूल किस तरह से प्रॉपर्ली वो यूज़ करना जाता है. तो HDFS, this is Hadoop Distributed File System. It states that the file will be broken into blocks and stored in nodes over the distributed architecture. जो distributed architecture है आपका, उसमें जो files है वो break होगी अलग अलग blocks में और store होगी अलग अलग nodes में, जो कि आपका distributed architecture है. Second modules of Hadoop is YARN, that is YARN, and YARN का full form है Yet Another Resource Negotiator. Okay, so Yet Another Resource Negotiator is the second module of Hadoop, where it is used for job scheduling and managing the cluster. जो कि YARN जो होता है Yet Another Resource Negotiator, ये आपका यूज इसलिए किया जाता है for the job scheduling and managing the cluster. Third is MapReduce. MapReduce जो है वो perform करता है, this is a framework which helps Java program to do the parallel computation on data using the key value pair. Key value pair को यूज करते करते वो आपका parallel computation डेटा जो होता है उस पर पैरेलल आपका ये कंप्यूटेशन करता है. The second point we have the map task takes input data and converts it into the data set which can be computed in the key value pair. तो आपका जो map task होता है वो आपका input data लेगा and even though it converts into the data set which is computed in the value pair, as well as if I'm talking about the third one, the output of the map task is consumed by reduced task and then reduce given the desired result. तो जैसे ही map task की बात करते हैं तो वो consume करता है आपका reduced task को, उसके साथ वो जो reduced task होता है उसको और reduce करता है for becoming taking out the desired result. Moving on with the next that we have is the fourth one is Hadoop Common. Hadoop Common is the fourth part of your modules, and that is these Java libraries are used to extract, used to attach Hadoop
and are used by the other Hadoop modules. तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपके जावा लाइब्रेरीज है जो कि Hadoop कॉमन है, ये आपके यूज़ किए जाते हैं Hadoop के थ्रू और Hadoop मॉड्यूल्स के थ्रू. Okay, this is the part of modules only. Architecture of Hadoop. Now coming to the last heading for the session, but we'll discuss this architecture of Hadoop in the this the following class only. So architecture of Hadoop में पहला heading है आपका name node. What is name node? I will show you by an structure also. So name node में आपका है, it is a single master server. ये एक single master server है that exists in the HDFS, जो कि HDFS में HDFS cluster में आपका exist करता है, जिससे like Hadoop distributed file system structure cluster में exist करता है. It simplifies the architecture of the system. ये जो आपका नेम नोड है ये आपका सिंप्लीफाई करता है आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम का. एज इट इज़ अ सिंगल नोड इट मे बिकम द रीजन ऑफ सिंगल पॉइंट फेलर. तो क्योंकि ये सिंगल नोड इसमें होता है, इस वजह से अगर सिंगल पॉइंट फेलर होगा तो फिर भी ये भी अकर नहीं करेगा. इट मैनेजेस द फाइल्स नेम स्पेस बाय एग्जीक्यूटिंग एन ऑपरेशन लाइक ओपनिंग, रीनेमिंग एंड क्लासिंग द फाइल. ओके तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि क्योंकि ये फाइल सिस्टम को मैनेज करता है नेम स्पेस के साथ, तो ये एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन, जैसे कि आपका ओपनिंग करता है, रीनेमिंग करता है, क्लासीफाई करता है फाइल्स को अकॉर्डिंग टू द नेम नोड. डेटा नोड की बात करते हैं. दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट द HDFS द Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्लस्टर कंटेन्स द मल्टीपल डेटा नोड. तो आपके जैसा कि नेम नोड है वो सिंगल आपका नोड है, बट आपका Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो क्लस्टर है वो आपका मल्टीपल डेटा नोड है. ईच डेटा नोड कंटेन मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स. हर एक जो डेटा नोड है वो आपका मल्टीपल डेटा ब्लॉक्स को कंटेन करता है. दीज डेटा ब्लॉक्स आर यूज टू स्टोर डेटा. ये हर एक जो डेटा ब्लॉक है ये आपका डेटा स्टोर करने के लिए यूज करा जाता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा नोड टू रीड एंड राइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाइल सिस्टम क्लाइंट. फाइल सिस्टम क्लाइंट से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा नोड की कि वो आपका रीड भी करे एज वेल एज राइट भी करे, रिक्वेस्ट करे फाइल सिस्टम क्लाइंट्स को. इट परफॉर्म्स अ ब्लॉक क्रिएशन. जो ये परफॉर्म करता है ब्लॉक क्रिएशन को, डिलीशन को करता है, रेप्लिकेशन को करता है अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नेम नोड. नेम नोड के इंस्ट्रक्शन से ही आपका क्रिएशन भी करता है, डिलीशन भी करता है, रेप्लिकेशन भी करता है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेम नोड. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop that we have to discuss here. The third one is the job tracker. The role of the job tracker is to accept the map reduce. Job tracker का आपका जो role होता है वो आपका accept करता है map reduce jobs को for the client and process the data for using the name node. In response, name node provides metadata to the job tracker. तो ऑफकोर्स जो रिस्पॉन्स होता है नेम नोड का वो प्रोवाइड करता है मेटाडेटा को जॉब ट्रैकर के लिए यूज़ करने के लिए. नेक्स्ट वन इज द टास्क ट्रैकर. अभी ये जॉब ट्रैकर हो गया, अब टास्क ट्रैकर हो गया. टास्क ट्रैकर जो होता है इट वर्क्स एज अ स्लेव नोड. ये आपका स्लेव नोड होता है फॉर द जॉब ट्रैकर. जॉब ट्रैकर का स्लेव नोड होता है जिसे हम टास्क ट्रैकर कहते हैं. इट रिसीव्स टास्क एंड कोड फ्रॉम द जॉब ट्रैकर एंड अप्लाइज दैट कोड ऑन अ फाइल. दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज मैपर्स. तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका टास्क होता है वो रिसीव किया जाता है इस जॉब ट्रैकर के थ्रू और फिर ये अप्लाई करता है उसी कोड को उस फाइल में और फाइल को ट्रैक करने के बाद वो प्रोसेस करता है और उसको ही हम मैपर कहते हैं. अब बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में. हमने जो इतना सारा डिस्कस किया उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे उसके आर्किटेक्चर को, जो कि आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop है. आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop में पहला पार्ट जो है वो दैट इज दिस इज द पार्ट ऑफ मास्टर एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द स्लेव. मास्टर्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो हियर इट इज़ अ जॉब ट्रैकर. जॉब ट्रैकर की बात करते हैं तो जॉब ट्रैकर में आपका पहला है दैट इज़ योर टास्क ट्रैकर. ओके तो जॉब ट्रैकर जो है पहला टास्क ट्रैकर है और जॉब ट्रैकर जो है वो आपके स्लेव वाले में जाएगा टास्क ट्रैकर पे. तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं कि जॉब ट्रैकर जो है वो दोनों के आपके टास्क ट्रैकर्स में जाएगा. ये आपका मैप रिड्यूस लेयर है और या HDFS लेयर है दैट इज योर Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लेयर. दिस इज द मास्टर वन, दिस इज द स्लेव वन. ओके तो जॉब ट्रैकर जो कि मास्टर वाले में था वो आपका टास्क ट्रैकर गया एंड टास्क ट्रैकर आपका स्लेव वाले में भी गया. सेकंड वाले में देखो डेटा नोड है. डेटा नोड अब यहाँ पे जो नेम नोड था नेम नोड से डेटा नोड पे गया और नेम नोड से ही डेटा नोड पे गया. तो नेम नोड से आप डेटा नोड पे जाते हो इन द केस ऑफ द मास्टर एज वेल एज इन द स्लेव. बट फॉर द टास्क ट्रैकर इट गोज फ्रॉम द जॉब ट्रैकर टू द टास्क ट्रैकर ईदर इन द मास्टर नोड एंड द स्लेव नोड. बट इसमें सिर्फ कंसिडर करने की ये जरूरत है आपको कि जो जॉब ट्रैकर होता है या फिर आपका जो नेम नोड होता है ये सिर्फ और
सिर्फ आपके मास्टर में ही होगा, आपके स्लेव में नहीं होगा. ओके, बट इन द कंसिस्ट ऑफ टास्क ट्रैकर एज वेल एज योर डेटा नोड, तो वो आपके दोनों में कंसिस्ट करेंगे. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ Hadoop दैट वी हैव टू डिस्कस. सो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू. होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.